श्रीजगदम्बिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणं षष्ठः स्कन्धः अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। राजा तालध्वज स्त्रीरूपधारी नारद जी का विवाह, अनेक पुत्र पौत्रों की उत्पत्ति और युद्ध में उन सब की मृत्यु, नारद जी का शोक और भगवान विष्णु की कृपा से पुनः स्वरूप बोध। नारद उवाच इत्युक्तोऽहं तदा तेन राज्ञा तालध्वजेन च विमृश्य मनसात्यर्थं तमुवाच विशाम्पते राजन्नाहं विजानामि पुत्री कस्येति निश्चयं पितरौ क्वचमेकेन स्थापिता च सरोवरे किं करोमि कु गच्छामि कथं मे सुकृतं भवेत् निराधारास्मि राजेन्द्र चिन्तयामि चिकीर्षितं दैवमेव परं राजन्नास्त्यत्र पौरुषं मम धर्मज्ञोऽसि महीपाल यथेच्छसि तथा कुरु तवाधीनास्म्यहं भूप न मे कोऽप्यस्ति पालकः न पिता न च माता च न स्थानं न च बान्धवा। इत्युक्तोऽसौ मया राजा बभूव मदनातुरः मां निरीक्ष्य विशालाक्षं सेवका नित्युवाचः नरयानमानयध्वं चतुर्बाह्यं मनोहरम् आरोहणार्थमस्यास्तु कौशेयाम्बरवेष्टितं मृद्वास्तरणसंयुक्तं मुक्ताजालविभूषितं चतुरस्रं विशालं च सुवर्णरचितं शुभं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भृत्या सत्वरगामिनः आनिन्योशिविकां दिव्यां मदर्थे वस्त्रवेष्टिताम् आरूढाहं तदा तस्यां तस्य प्रियचिकीर्षया मुदितोऽसौ गृहे नीत्वा मां तदा पृथिवीपतिः विवाहविधिना राजा शुभे लग्ने शुभे दिने उपयेमे च मां तत्र हुतभुक् सन्निधौ ततः तस्याहं वल्लभा जाता प्राणेभ्योऽपि गरीयसी सौभाग्यसुन्दरीत्येवं नाम तत्र कृतं मम रम्माणो मया सार्धं सुखमाप महीपतिः नानाभोगविलासैश्च कामशास्त्रोदितैस्तथा राजकार्याणि सन्त्यज्य क्रीडासक्तो दिवानिशं नासौ विवेद गच्छन्तं कालं कामकलारतः उद्यानेषु च रम्येषु वापेषु च गृहेषु च हर्मेषु वरशैलेषु दीर्घिकासु वरासु च वारुणे मदमत्तोऽसौ विहरन् कानने शुभे विसृज्य सर्वकार्याणि मदधीनो बभूवः व्यासाहं तेन संसक्ता क्रीडारसवशीकृता स्मृतवान् पूर्वदेहं न पुंभावं मुनिजन्म च ममैवायं पतिर्योषा हम पत्नी सुप्रिया सती पट्टराज्ञे विलासज्ञा सफलं जीवितं मम इति चिन्तयति तस्मिन् प्रेमबद्धा दिवानिशं क्रीडासक्ता सुखे लुब्धा संस्थिता वशवर्तिनी विस्मृतं ब्रह्मविज्ञानं ब्रह्मज्ञानं च शाश्वतं धर्मशास्त्रपरिज्ञानं तदासक्तमना स्थिता एवं विहरतस्तत्र वर्षाणि द्वादशैवतो गतानि क्षणवत्कामक्रीडासक्तस्य मे मुने जाता गर्भवती चाहं मुदं प्राप नृपस्तदा कारयामास विधिवत् गर्भसंस्कारकर्म च अपृच्छद्दोहदं राजा प्रीणयन् मां पुनः पुनः नाब्रवं लज्जमानाहं नृपं प्रीतमनाभृशं सम्पूर्णे दशमे मासि पुत्रो जातस्ततो मम शुभे निग्रहनक्षत्रलग्नताराबलान्विते बभूव नृपतिर्गेहे पुत्रजन्ममहोत्सवः राजा परमसन्तुष्टो बभूव सुतजन्मतः सूतकान्ते सुतं वीक्ष्य राजा मुदमवापः अहं भूमिपतिश्चासं प्रिया भार्या परन्तप ततो वर्षद्वयान्ते वै पुनर्गर्भो मया धृतः द्वितीयस्तु सुतो जाता सर्वलक्षणसंयुतः सुधन्वेति सुतस्याथ नाम चक्रे नृपस्तदा वीरवरमेति ज्येष्ठस्य ब्राह्मणै प्रेरितस्त्वयम् एवं द्वादशपुत्राश्च प्रसूता भूपसम्मताः मोहितोऽहं तदा तेषां प्रीत्या पालनलालने पुनरष्टसुता काले काले जाता सुरूपिणः गार्हस्थं मे तथा पूर्णं सम्पन्नं सुखसाधनं तेषां दारक्रियाकाले कृता राज्ञा यथोचिता स्नुषाभिश्च तथा पुत्रै परिवारो महानभूत् तथा पौत्रादिसम्भूतास्तेऽपि क्रीडारसान्विता आसन्नानारसोपेता मोहवृद्धिकराभृशं कदाचित् सुखमैश्वर्यं कदाचित् दुःखमद्भुतं पुत्रेषु रोगजनितं देहसन्तापकारकं
परस्परं कदाचिच्चो विरोधो भूत्सुदारुणः पुत्राणां वा वधूनां च तेन संतापसंभवः सुखदुःखात्मके घोरे मिथ्याचारकरे भृशं संकल्पजनिते क्षुद्रे मग्नोऽहं मुनिसत्तमः विस्मृतं पूर्वविज्ञानं शास्त्रज्ञानं तथागतं योषा भावे विलीनोऽहं गृहकार्येषु सर्वथा अहंकारस्तु संजातो भृशं मोहविवर्धकः एते मे बलिना पुत्रा स्नुषा सुकुलसंभवा एते पुत्रा सुसन्नद्धा क्रीडन्ते मम वेश्मसु धन्याहं खलु नारीणां संसारेऽस्मिन्नहो भृशं नारदोऽहं भगवता वञ्चितो मायया किल न कदाचिन्मयाप्येवं चिन्तितं मनसा किल राजपत्नी शुभाचारा बहुपुत्रा पतिव्रता धन्याहं किल संसारे कृष्णैवं मोहितस्त्वहम् अथ कश्चिन्नृपाकामं दूरदेशाधिपो महान् अरातिभावमापन्ना पतिना सह मानद कृत्वा सैन्यसमायोगं रथैश्च वारणैर्युतम् आजगामकान्यकुब्जे पुरे युद्धमचिन्तयत् वेष्टितं नगरं तेन राज्ञा सैन्ययुतेन च मम पुत्राश्च पौत्राश्च निर्गता नगरात् तदा संग्रामस्तु मूलस्तत्र कृतस्तैस्तेन पुत्रकैः हतारणे सुता सर्वे वैरिणा कालयो गतः राजा भग्नस्तु संग्रामात् आगता स्वगृहं पुनः श्रुतं मया मृता पुत्रा संग्रामे वृषदारुणे स हत्वा मे सुतान् पौत्रान् गतो राजा बलान्वितः क्रन्दमानाहं तत्र गता समरमण्डले दृष्ट्वा तान् पुत्रान् पौत्राश्च दुःखपीडिता विललापा हमायुष्मन् शोकसागर संप्लवे हा पुत्रा कुगता मेद्या हा हतास्मि दुरात्मना दैवेनातिबलिष्ठेन दुर्वारेणातिपापिना एतस्मिन्नन्तरे तत्र भगवान् मधुसूदनः कृत्वा रूपं द्विजस्यागाद्वृद्धा परमशोभनः सुवासा वेदवित्कामं मत्समीपं समागतः मामुवाचातिदीनानां सकृन्दमानां रणाजिरे ब्राह्मण उवाच किं विषेदसि तन्वंगी भ्रमोऽयं प्रकटीकृतः मोहेन कोकिलालापे पतिपुत्र गृहात्मके का त्वं कस्यासुता केमि चिन्तयात्मगतिं परां उत्तिष्ठ रोदनं त्यक्त्वा स्वस्था भव सुलोचने स्नानं च तिलदानं च पुत्राणां कुरु कामिनी परलोकगतानां च मर्यादा रक्षणाय वै कर्तव्यं सर्वथा तीर्थे स्नानं तु न गृहे क्वचित् मृतानां किल बन्धूनां धर्मशास्त्रविनिर्णयः नारद उवाच इत्युक्ता तेन विप्रेण वृद्धेन प्रतिबोधिता उत्थिताहं नृपेणाथ युक्ता बन्धुविराभृता अग्रतो द्विजरूपेण भगवान् भूतभावनः चलिताहं ततस्तूर्णं तीर्थं परमपावनं हरिर्मां कृपया तत्र पुंतीर्थे सरसि प्रभो नीत्वा भगवान् विष्णुर्द्विजरूपी जनार्दनः स्नानं कुरुतडागेऽस्मिन् पावने गजगामिनी त्यजशोकं क्रियाकाला पुत्राणां च निरर्थकं कोटिशस्ते मृता पुत्रा जन्म जन्म समुद्भवा पितरा पतयश्चैव भ्रातरो जामयस्तथा केषां दुःखं त्वया कार्यं भ्रमेऽस्मिन् मानसोद्भवे वितथे स्वप्नसदृशे तापते देहिनामिह नारद उवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा तीर्थे पुरुषसंज्ञके प्रविष्टा स्नातु कामाहं प्रेरिता तत्र विष्णुना मज्जनादेव तीर्थेषु पुमान् जाता क्षणादपि हरिर्वीणां करे कृत्वा स्थितस्तीरे सुदेहवान् उन्मज्य च मया तीरे दृष्टा कमललोचनः प्रत्यभिज्ञातदा जाता मम चित्ते द्विजोत्तमा संचिन्तितं मया तत्र नारदोऽहमिहागतः हरिणा सह स्त्रीभावं प्राप्तो माया विमोहितः इति चिन्ता परश्चाहं यदा जातस्तदा हरि मामाह नारदा गच्छ किं करोसि जले स्थितः विस्मितोऽहं तदा स्मृत्वा स्त्रीभावं दारुणं भृशं पुनः पुरुषभावश्च सम्पन्ना केन हेतुना। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां षष्ठस्कन्धे नारदस्य पुनः स्वरूप प्राप्तिवर्णनं नामैकोनत्रिंशोऽध्यायः। अथ त्रिंशोऽध्यायः राजा तालध्वज का विलाप और ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु के प्रबोधन से उन्हें वैराग्य होना। भगवान विष्णु का नारद से माया के प्रभाव का वर्णन करना। नारद उवाच मां दृष्ट्वा नारदं विप्रं विस्मितोऽसौ महीपतेः क्व गता मम भार्या च कुतोऽयं मुनिसत्तमः विललाप नृपस्तत्र हा प्रियेति मुहुर्मुहुः क्व गता मां परित्यज्य विलपन्तं वियोगिनं
विना त्वां विपुलश्रोणी वृथा मे जीवितं गृहं राज्यं कमलपत्राक्षे किं करोमि शुचिस्मिते न प्राणा मे बहिर्यान्ति विरहेण तवाधुना गतो वै प्रीतिधर्मस्तु त्वां ऋते प्राणधारणात् विलपामि विशालाक्षि देहि प्रत्युत्तरं प्रियं क्व गता सा मयि प्रीतिर्याभूत् प्रथमसङ्गमे निमग्ना किं जले शुभुर्भक्षिता मत्स्यकक्षपै गृहीता वरुणेनासु मम दौर्भाग्ययो गता धन्यासु चारु सर्वाङ्गी या त्वं पुत्रैः समागता अकृत्रिमस्तु पुत्रेषु स्नेहस्ते मृतभाषिणी। न युक्तमधुना यन्मां विहाय त्रिदिवं गता विलपन्तं सतिं दीनं पुत्रस्नेहेन यन्त्रिता उभयं मे गतं कान्ते पुत्रास्त्वं प्राणवल्लभा तथापि मरणं नास्ति दुःखितस्य भृशं प्रिये किं करोमि को गच्छामि रामो नास्ति महीतले रामाविरहजं दुःखं जानाति रघुनन्दन विधिना निष्ठुरेणात्र विपरीतं कृतं भुवि दम्पत्योर्मरणं भिन्नं सर्वथा समचित्तयो उपकारस्तु नारीणां मुनिभिर्भीता किल यदुक्तं धर्मशास्त्रेषु ज्वलनं पतिना सह एवं विलपमानं तं राजानं भगवान् हरिः निवारयामास तदा वचनैर्युक्तियोजितैः श्रीभगवानुवाच किं विषेदसि राजेन्द्र क्व गता ते प्रियाङ्गना न श्रुतं किं त्वया शास्त्रं न कृतोऽसौ बुधाश्रया कासात्कस्तं को संयोगो वियोगा कीदृशस्तव प्रवाहरूपे संसारे नृणां न उत्तरतामिव गृहे गच्छ नृपश्रेष्ठ वृथा ते रुदितेन किं संयोगश्च वियोगश्च दैवाधीनः सदा नृणाम् अनया स ते राजन् संयोगस्त्वेषं वृतः भुक्ता त्वया विशालाक्षे सुन्दरी तनुमध्यमा न दृष्टौ पितरावस्यास्त्वया प्राप्ता सरोवरे काकताली प्रसंगेन यद्भूतं तत्तथागतं माशोकं कुरु राजेन्द्र कालो हि धृतिक्रमा कालयोगं समासाद्य भुङ्क्ष भोगान् गृहे यथा यथा गता गता सा तु तथैव वरवर्णिनी यथा पूर्वं तथा तत्र गच्छ कार्यं कुरु प्रभो रुदितेन तवाद्यैव नागमिष्यति कामिनी वृथा शोचसि पृथिवीश योगयुक्तो भवाधुना भोगाकालवसादेति तथैव प्रतीयाति च नात्र शोकस्तु कर्तव्यो निष्फले भववर्त्मनि नैकत्र सुखसंयोगो दुःखयोगस्तु नैकता घटिका यन्त्रवत्कामं भ्रमणं सुखदुःखयो मना कृत्वा स्थिरं भूपा कुरु राज्यं यथा सुखम् अथवा न्यस्य दायादे वनं से वयसाम्प्रतं दुर्लभो मानुषो देह प्राणिनां क्षणभङ्गुरा तस्मिन् प्राप्ते तु कर्तव्यं सर्वथैवात्मसाधनं जिह्वोपस्तरसो राजन् पशुयोनिषु वर्तते ज्ञानं मानुषदेहे वै नान्यासु च कुयोनिषु तस्मात् गच्छ गृहं त्यक्त्वा शोकं कान्ता समुद्भवं मायेयं भगवत्यास्तु यया सम्मोहितं जगत् नारद उवाच इत्युक्तौ हरिणा राजा प्रणम्य कमलापतिं कृत्वा स्नानविधिं सम्यक् जगाम निजमन्दिरं दत्त्वा राज्यं स्वपौत्राय प्राप्य निर्वेदमद्भुतं वनं जगाम भूपालस्तत्त्वज्ञानमवाप च गते राजन्यहं वीक्ष्य भगवन्तमधोक्षजं तमब्रवं जगन्नाथं वसन्तं मां पुनः पुनः वञ्चितोऽहं त्वया देव ज्ञातं मायाबलं महत् स्मरामि चरितं सर्वं स्त्रीदेहे यत्कृतं मया ब्रूहि मे देवदेवेश प्रविष्टोऽहं सरोवरे विगतं पूर्वविज्ञानं स्नानादेव कथं हरे योषिद्धेऽहं समासाद्य मोहितोऽहं जगद्गुरो पतिं प्राप्य नृपश्रेष्ठं पुलोमि वासवं यथा मनस्तदेव तच्चित्तं देहा सच पुरातनः लिङ्गं तदेव देवेश स्मृतिर्नाशा कथं हरे विस्मयोऽयं महान् मेत्र ज्ञाननाशं प्रति प्रभो कथयाद्य रमाकान्तकारणं परमं च यत् नारीदेहं मया प्राप्य भुक्ता भोगाहिने कसा सुरापानं कृतं नित्यं विधिहीनं च भोजनं मया तदेव न ज्ञातं नारदोऽहमिति स्फुटं जानाम्यद्य यथा सर्वं विविक्तं न तथा यदा तदा विष्णुर्वाच पश्य नारद मायावी विलासोऽयं महामते देहेषु सर्वजन्तूनां दशा वेदाहिने कसा जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिश्च तुरीया देहिनां दशा तथा देहान्तरे प्राप्ते संदेहा कीदृशा पुनः सुप्तो नरो न जानाति न शृणोति वदत्यपि पुनः प्रबुद्धो जानाति सर्वं ज्ञातमशेषतः निद्रया चाल्यते चित्तं भवति स्वप्नसंभवा नानाविधा मनोभेदा मनोभावाहिने कसा गजो मामन्तु मायाति न शक्तोऽस्मि पलायने किं करोमि न मे स्थानं यत्र गच्छामि सत्वरः मृतं पितामहं स्वप्ने पश्यति स्वगृहागतं संयोगस्तेन वार्ता च भोजनं स मन्यते
प्रबुद्धा खलु जानाति स्वप्ने दृष्टं सुखासुखं स्मृत्वा सर्वं जनेभ्यस्तु विस्तरात् प्रवदत्यपि स्वप्ने कोऽपि न जानाति भ्रमोऽयमिति निश्चयः तथा तथैव विभवो मायाया दुर्गमा किल नाहं नारद जानामि पारं परमदुर्घटं गुणानां किल मायाया नैव सम्भुर्न पद्मजः कोऽन्यो ज्ञातुं समर्थो भोन्मानतो मन्दधी पुनः माया गुणपरिज्ञानं न कस्यापि भवेदिह गुणत्रयकृतं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं विना गुणैर्न संसारो वर्तते किञ्चिदप्यदः अहं सत्त्वप्रधानोऽस्मि रजस्तमसमन्वितः न कदाचित् त्रिभिर्हीनो भवामि भुवनेश्वरः तथा ब्रह्मा पिता तेत्र रजो मुख्या प्रकीर्तितः तमा सत्त्वसमायुक्तो न ताभ्यामुज्झिता किल शिवस्तथा तमो मुख्यो रजा सत्त्वसमावृतः गुणत्रयविहीनस्तु नैव कोऽपि मया श्रुतः तस्मान्मोहो न कर्तव्यः संसारेऽस्मिन् मुनीश्वर माया विनिर्मिते सारे पारे परमदुर्घटे दृष्टा माया त्वयाद्यैव भुक्ता भोगाहिने कसा किं प्रक्षसि महाभाग तस्याश्चरितमद्भुतम्। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां षष्ठस्कन्धे माया प्राबल्यवर्णनं नाम 300 अथैकत्रिंशोऽध्यायः। व्यास जी का राजा जन्मेजय से भगवती की महिमा का वर्णन करना। व्यास उवाच निशामय महाराज ब्रवीमि विशदाक्षरं माहात्म्यं खलु मायाया नारदात्तु मया श्रुतं मया पुनर्मुने पृष्टो नारदा सर्ववित्तमः श्रुत्वा कथां मुनेस्तस्य नारीदेहसमुद्भवां ब्रूहि नारद पश्चात् किं कथितं हरिणा तदा क्व गतश्च जगन्नाथो भवता स माधवः। नारद उवाच इत्युक्ता भगवास्तस्मिन् तडागे ते मनोहरे आरुह्य गरुणं गन्तुं वैकुण्ठे च मनो दधे मामुवाच रमाकान्तो यथेष्टं गच्छ नारद एहि वा मम लोकं त्वं यथा रुचि तथा कुरु ब्रह्मलोकं गतश्चाहम् आप्रक्ष मधुसूदनं भगवानपि देवेशस्तत्क्षणात् गरुणासनः वैकुण्ठमगमत्तूर्णं मामादिश्य यथा सुखं ततोऽहं पितृसदनं गतो याते जनार्दने चिन्तयन् सकलं दुःखं सुखं च परमाद्भुतं गत्वा प्रणम्य पितरं स्थितो यावत् पुरा पितुः तावत् पृष्टो मुने पित्रा वीक्ष्य चिन्तातुरं तु मां ब्रह्मोवाच क्व गतोऽसि महाभाग कस्मात् चिन्तातुरा सुत स्वस्थं नैवाद्य पश्यामि मनस्ते मुनिषत्तम केनापि वञ्चितोऽसि त्वं दृष्टं वा किञ्चिदद्भुतं विषण्णं गतविज्ञानं पश्यामि त्वां कथं सुत। नारद उवाच इति पृष्टस्तदा पित्रा वृष्यां समुपवेश्य च तमब्रवं स्ववृत्तान्तं मायाबलसमुद्भवं वञ्चितोऽहं पिता कामं विष्णुना प्रविष्णुना स्त्रीभावं गमिता कामं वर्षाणेषु बहून्यपि अनुभूतं महद्दुःखं पुत्रशोकसमुद्भवं प्रबोधितोऽहं तेनैव मृदुवाक्यामृतेन च पुनः सरोवरे स्नात्वा जातोऽहं नारदापुमान् किमेतत्कारणं ब्रह्मण्यन्मोहमगमं तदा विस्मृतं पूर्वविज्ञानं तन्मयस्तरसा कृतः एतन्मायाबलं ब्रह्मन् जानेऽहं दुरत्ययं ज्ञानहानिकरं जातं मूलं मोहस्य विस्फुटम् अनुभूतं मया सम्यक् ज्ञातं सर्वं शुभाशुभं कथं तं जितवांस्तात तं पायं वदस्व मे। नारद उवाच विज्ञप्तोऽसौ मया धाता प्रीतिपूर्वमता परं मामुवाच स्मृतं कृत्वा पिता मे वासवीसुत। ब्रह्मोवाच दुर्जयैषासुरैः सर्वैर्मुनिभिश्च महात्मभिः तापसर्ज्ञानयुक्तैश्च योगिभिः पवनासनैः नाहं तथा सर्वथा ज्ञातुं शक्तो मायां महाबलां विष्णुर्ज्ञातुं न शक्तश्च तथा शम्भुरुमापतिः दुर्गे यासा महामाया सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी कालकर्मस्वभावाद्यैर्निमित्तकारणैर्भृता शोकं मा कुरु मेधाविस्तत्र माया महाबले न चैव विस्मयाकार्यो वयं सर्वे विमोहिता। नारद उवाच पितृत्युक्तस्तदा व्यासः तमाप्रक्ष्य गतस्मयः आगतोऽस्म्यत्र पश्यन् वै तीर्थानि च वराणि च तस्मात् त्वमपि सन्त्यज्य मोहं कौरवनाशजं कालक्षयं सुखासीन स्थानेऽस्मिन् कुरुषत्तम। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं निश्चयं हृदये कृत्वा विचरस्व यथा सुखं। व्यास उवाच इत्युक्त्वा नारदो राजन् गतो मां प्रतिबोध्य च अहं तच्चिन्तयन् वाक्यं यदुक्तं मुनिना तदा स्थिता सरस्वती तीरे कल्पे सारस्वते वरे कालातिवाहनायैतत्कृतं भागवतं मया पुराणमुत्तमं भूप सर्वसंशयनाशनं
नानाख्यान समायुक्तं वेद प्रामाण्य संश्रितं संदेहोत्र न कर्तव्या सर्वथा नृपसत्तमा यथेन्द्रजालिका कश्चित् पाञ्चालीं दारवीं करे कृत्वा नर्तयते कामं स्वेच्छया वशवर्तिनीं तथा नर्तयते माया जगत्स्था वरजंगमं ब्रह्मादिस्तंभपर्यन्तं सदेवासुरमानुषं पंचेन्द्रियसमायुक्तं मनश्चित्तानुवर्तनं गुणास्तु कारणं राजन् सर्वेषां सर्वथा त्रयः कार्यं कारणसंयुक्तं भवतीति विनिश्चयः भिन्न भिन्न स्वभावास्ते गुणा माया समुद्भवा शांतो घोरस्तथा मूढ़त्रयस्तु विविधायतः तत्समेता पुमान् नित्यं तद्विहीना कथं भवेत् न भवत्येव संसारे रहितस्तन्तुभिपटः तथा गुणत्रिविहीनो न देहीति विनिश्चयः देवदेहो मनुष्यो वा तिरश्चो वा नराधिप गुणैर्विरहितो न स्यान्मृद्विहीनो घटो यथा ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्रत्रयश्चामे गुणाश्रयः कदाचित् प्रीतियुक्तास्ते तथा प्रीतियुता पुनः तथा विषादयुक्तास्ते भवन्ते गुणयोगतः ब्रह्मा कदाचित् सत्त्वस्थस्तदा शान्तः समाधिमान् प्रीतियुक्तो भवेत् सर्वं भूतेषु ज्ञानसंयुतः पुनः सत्त्वविहीनस्तु रजोगुणसमावृतः तदा भवेत् घोररूपः सर्वत्र प्रीतिसंयुतः यदा तमोगुणाविष्टो बाहुल्येन भवेद् विधि तदा विषादसम्पन्नो मूढो भवति नान्यथा माधवोऽपि सदा सत्त्वसंश्रितः सर्वथा भवेत् यदा शान्ता प्रीतियुक्तो भवेत् ज्ञानसमन्वितः स एव राज आधिक्यात् अप्रीति संयुतो भवेत् घोरस्य सर्वभूतेषु गुणाधीनो रमापतिः रुद्रोऽपि सत्त्वसंयुक्ता प्रीतिमान् शान्तिमान् भवेत् रजो निमीलितासोऽपि घोरा प्रीतिविवर्जिता तमो गुणयुतासोऽपि मूढो विषाद अयुक् भवेत् एते यदि गुणाधीना ब्रह्म विष्णुहरादया सूर्यवंशोद्भवास्तद्वत् सोमवंशभवा अपि मन्वादयश्च ये प्रोक्ताश्चतुर्दश युगे युगे अन्येषां चैव का वार्ता संसारेऽस्मिन् नृपोत्तम मायाधीनं जगत्सर्वं सदेवासुरमानुषं तस्मात् राजन्न कर्तव्या सन्देहोऽत्र कदाचन देहि मायापराधीनश्चेष्टते तद्वशानुगा सा च मायापरे तत्त्वे संविद्रूपेऽपि सर्वदा तदधीना प्रेरिता च तेन जीवेषु सर्वदा ततो माया विशिष्टान्तां संविदं परमेश्वरीं माहेश्वरीं भगवतीं सच्चिदानन्दरूपिणीं ध्यायेत् तथा राधयेच्च प्रणमेच्च जपेदपि तेन सा सदया भूत्वा मोचयत्येव देहिनम् स्वमायां संहरत्येव स्वानुभूतिप्रधानता भुवनं खलु माया स्यात् ईश्वरी तस्य नायिका भुवनेशी तथा प्रोक्ता देवी त्रैलोक्यसुन्दरी तद्रूपे यदि सक्तं स्यात् चित्तं भूमिपते सदा मायया किं भवेत् तत्र सत्सद्भूतया नृप तस्मान्माया निरासार्थं नान्यद्वै देवतान्तरं समर्थं तो विना देवीं सच्चिदानन्दरूपिणीं तमो राशिं नाशयितुं शक्तं नैव तमो भवेत् किन्तु भानुप्रभाचन्द्र विद्युद् वह्निप्रभादया तस्मान्मायेश्वरीमम्बां स्वप्रकाशां तु संविदम् आराधयेद् अतिप्रीत्या मायागुणनिवृत्तये इति सम्यक् मयाख्यातं वृत्तासुरवधाधिकं यत्पृष्टं राजशार्दूल किमन्यक्षोतुमिच्छसि पूर्वार्धोऽयं पुराणस्य कथितस्तव सुब्रत यत्र देव्यास्तु महिमा विस्तरेणोपपादितः एतद्रहस्यं श्रीमातुर्न देयं यस्य कस्यचित् देयं भक्ताय शान्ताय देवी भक्तिरताय च शिष्याय ज्येष्ठपुत्राय गुरुभक्तियुताय च इदमखिलकथानां सारभूतं पुराणं निखिलनिगमतुल्यं सप्रमाणानुविद्धं निखिलनिगमतुल्यं सप्रमाणानुविद्धं पठति परमभावाद्यः शृणोतीह भक्त्या स भवति धनवान्यै स भवति धनवान् वै ज्ञानवान् मानवोऽत्र। जय जय श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रनाम संहितां षष्ठस्कन्धे भगवती माहात्म्यवर्णनं नामैकत्रिंशोऽध्यायः षष्ठः स्कन्धः परिपूर्णः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पूर्वार्धः सम्पूर्णम्। श्री जगदम्बार्पणम् अस्तु। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। जय माँ दुर्गे भवानी।